थोड़ा सा कैलकुलस से रिलेटेड है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि हम जब ट्रिप से वापस आ रहे थे तो मेरी और एक किस्म की सर की आर्ग्यूमेंट हुई थी कि ABS कैसे काम करता है। मैंने थोड़ी सी गलत आर्ग्यूमेंट दी थी, इस वजह से मुझे ये प्रेजेंटेशन पड़ गई। सो इन टर्म्स ऑफ यूजर ब्रेकिंग, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, सम ऑफ देम, बट ओके। यूजर ब्रेकिंग में ये होता है जब आप पिस्टन पे प्रेस करके पेडल पे प्रेस करते हैं, पेडल पे प्रेस करते हैं तो वो जो पेडल आगे जाके फ्लूइड को टच करता है और वो फ्लूइड होता है वो आगे जाके फोर व्हील्स जितने भी व्हील्स हैं वो उनमें जाके सप्लाई होता है तो तब जाके ब्रेकिंग होती है। लेकिन इसकी वजह से लेट से बारिश हो रही है तो स्केटिंग का खतरा होता है। वो ऐसे होता है कि जब आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं, आई एम सॉरी फॉर श्रीलंकन स्टूडेंट्स बट आई विल ट्राई टू कोप अप मैनी टाइम। ओके, सो होता है ऐसे कि स्केटिंग का इशू होता है। वैसे होता है कि जब आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर लॉक हो जाता है, लॉक होने की वजह से वो जगह पे अटक जाता है। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, मौतें होती हैं, एक्सेट्रा। इसका सोल्यूशन एक साइंटिस्ट ने निकाला, आई डोंट नो हिज नेम करेक्टली बट ओके, वो ये था ABS। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी यही है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें अब आपको मैं बताता हूँ but let's start. You should pause for a moment, okay? If I will understand, then I can explain to Sri Lankan and the other students again. Okay. And little loud. But you should try to make it simple and easy because you are teacher, not too much in Delhi, okay? You should remember this. My Sri Lankan and my okay, brilliant gentlemen students, okay, he was discussed some issue about the braking system in a car or in a vehicle. But I noticed he was actually wanted to discuss, but I thought a little bit okay, opinion of the difference is not a big deal. So I requested him to prepare a presentation on the anti-braking system, or simply you can say ABS. Okay, today he will talk about ABS. Yes, please for that. These two equations are the one that made the whole anti-lock braking system. Okay, remember this, whenever you are talking about anything in real life, mathematics is involved, okay? Maybe at that time he was not thinking about this kind of mathematics, but technically this is there. So, these are the equations which are involved in this system. Could you please tell us the first equation represent okay, I will. Oh, okay. In the next slide. Okay, at first glance, you won't know what this means, right? Even I didn't know. So I'll try to explain. So this is the one that I have to explain. I never use the word bullshit, please. I am very much humble to my students. Anyhow, thank you. Okay, mean that math is useless. Okay. Yeah, thank you. Yes. Thank you for the one. Math is really okay. Math does not make any sense if you don't understand it. Okay. Thank you, Zab. So in simple words, math is useless if you don't understand it. The equation terms as slip rate, vehicle dynamics, or the wheel dynamics, or the slip ratio, this doesn't matter. This is useless if you don't understand it. So I'll try to explain that. Hello. Yes. Introduction. So I'll explain that before, but okay. बारिश में वही इशू है, स्केटिंग है, एक्सीडेंट्स हैं, मौतें हैं, लोगों को खतरा है। इसका सोल्यूशन निकालना है, ABS इसका सोल्यूशन है।
ABS में होता ये है कि वही ब्रेक जो आप एकदम से अप्लाई करते थे वो एकदम से नहीं होती। उसके लिए एक PID कंट्रोलर होता है जो उस ब्रेक को चेक कर रहा होता है कि वो रोड की ट्रैक्शन के साथ व्हीकल की ट्रैक्शन मैच कर रही है या नहीं। अगर तो जो इक्वेशन थी स्लिप रेट की x इज इक्वल टू जो भी है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इक्वेशन इस काम को चेक कर रही होती है कि वो जो व्हील है और जो रोड है उनकी ट्रैक्शन आपस में सही रख रही है या नहीं। वो 10 से 25% की रेशियो होती है। अगर वो उस रेशियो से बाहर होता है या वो लेस देन, इनइक्वालिटीज इसमें आ जाती है, इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट आता है। अगर 25% से ज़्यादा है तभी वो व्हील लॉक होता है, अगर वो 10% से कम है तब वो बहुत कम है। इस चीज़ को मैच करने के लिए ABS है। Okay, Uzair already have shown us about the equations. All equations are having multivariables. Variables mean at each instance equation will produce different kind of results according to the nature of road or the circumstances. Okay, variables mean changing. Equation is producing the change of results. Yes, please. ओके सर, ABS का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ब्रेक, वैसे तो चलो ठीक है ब्रेक का मैं बता दूँ। ABS में लेट्स से ये पैडल, ये उसकी सरफेस है, गाड़ी की सरफेस है, और ये पैडल जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपकी PID कंट्रोलर को यह रिस्पॉन्स जाता है। वो ये करता है, लेट्स से अगर बारिश हो रही है और उसके जो ब्रेकिंग के लिए जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो इस वजह से कि एक्सीडेंट का खतरा है, लेट्स से मोटरवे है और आगे कोई ऑब्स्टेकल है, आपने रोकना है। वो ये करेगा इसमें कि वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं अप्लाई करेगा, वो ये करेगा कि प्रेशर्स में अप्लाई करेगा। वो करके छोड़ेगा, करके छोड़ेगा, करके छोड़ेगा। इससे काफ़ी इफेक्टिव सोल्यूशन ऐसे आता है कि वो या तो व्हीकल, जो ही व्हीकल की जो स्लिप रेट होता है वो 25% तक जाने वाला होता है, तो वो PID कंट्रोलर जो होता है वो ब्रेक छोड़ देता है। अब ये भी कह सकते हैं कि उसमें स्पीड कैसे कम होती है, वो ऐसे कम होती है कि इसमें जो टाइम लेटेंसी होती है वो बहुत कम होती है। अब हम तो कैसे ना कि ऐसे ब्रेक होती है, लेकिन वो उस वक्त ऐसे नहीं हो रही होती, उस वक्त बहुत फास्ट हो रही होती है। इतनी फास्ट हो रही होती है कि इन टर्म्स ऑफ, अगर आप नेटवर्किंग में तो आपने टाइम लेटेंसी का सुना होगा, उसमें बहुत कम होती है जो हम मैच नहीं कर सकते, और जो हम मैयर भी करना बहुत मुश्किल होता है। PID कंट्रोलर में भी ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सिग्नल है ना, 0 या 1, 0 पे ब्रेक नहीं है तो 1 पे ब्रेक है। वो कितने टाइम, एक टाइम पे तो अराउंड 256 बिट्स या 512 बिट्स भी एक टाइम पे ऑक्यूपाई हो सकते हैं। ज़्यादा एकदम से ब्रेक लगना छोड़ना, ब्रेक लगना छोड़ना, स्टीयरिंग भी ईजी होती है और व्हीकल ब्रेकिंग भी ईजी होती है। क्यों होती है? व्हीकल ट्रैक्शन अपनी जगह से नहीं हटती, स्लिप रेट कम होता है, व्हीकल आराम से रुक सकती है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं। ये आपका ABS का सोल्यूशन है। Okay, Uzair wanted to explain that in the ABS system, brakes are working in terms of press release. Press release. This is happening in such a fast fashion that most of the vehicle main you can say the spare parts would not be damaged due to this system, and brakes can be applied in an amicable sense. So the concept of press release are performed in fastest possible way by using the control unit, and this is designed by the computing students. Yes, please. Okay, so यही आपके पास सोल्यूशन है ABS के साथ और ABS के बगैर। ABS के साथ आप स्टीयरिंग इजी कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई रोड है, चाहे वो रेनी रोड है, चाहे वो जैसा भी रोड है, आपके पास ये सोल्यूशन है और आपने इसे यूज़ कर। अगर आपके पास ABS नहीं है तो चांसेस आर, नीड फॉर स्पीड तो खेली होगी ना सालों ने, हैंड ब्रेक लगा के ड्रिफ्टिंग करते थे ना, इसमें हैंड ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन ड्रिफ्टिंग की बात नहीं करते। ये देखिए ट्राई करना। Okay, Uzair is telling us that in the ABS system, press release is controlling the car, or you can say road grip is sufficiently enhanced. But in case of other without ABS systems, you can say that at once brakes shift, slide the car on the road, or you can say accident can be happening. The principles of ABS are described as below on the screen. So I'll just forward it, click on the explain it. Okay. The quick press and release is called pressure modulation. Time latency matters and the PID controller matters. ABS can modulate the pressure to the brakes as often as 15 times per second. We can. Can you press the brake 15 times per second? No. Yes or no? No. Thank you. मजा तो नहीं लग रहा? ABS precisely. Yeah, he is talking about the
okay, value of 15 times per second press release is happening, so the car speed is reduced, okay, at each press release, so not at once. Yes, please. वही प्रिंसिपल है कि आपने व्हील्स के स्लिप रेट को मेंटेन रखना है, ना 10% से नीचे ना 25% से ऊपर। 25% से ऊपर होगा तो एक्सीडेंट का खतरा है, 10% से नीचे तो ब्रेक नहीं लगेगी। अब ब्रेक अप्लाई करते हैं वो तो 100% पे अप्लाई करते हैं ना। अब यूजुअली जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं वो हम हल्के हल्की करते हैं कि ठीक है अब गाड़ी आहिस्ता हो रही है आहिस्ता हो रही है। जब बिल्कुल हमें पता लगता है कि अब गाड़ी रोकनी है हमें तो हम फुल 100% अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता, आपकी ब्रेक और आपका PID कंट्रोलर और आपकी जो व्हील्स होती हैं वो तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं। आप ब्रेक 100% अप्लाई करोगे वो PID कंट्रोलर का रिस्पॉन्स जाएगा, लेकिन वो ब्रेक फुली अप्लाई नहीं होगी। वो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि वो PID कंट्रोलर का काम है कि वो स्लिप रेट मेंटेन करे। Because even you are applying the full brakes in the ABS system, but your computing model will tell us, will tell the brakes model that apply the brakes in a press release fashion so that it should not hurt damage the car, and this damaging can be happen due to the concept of inertia. You studied in the Newton law of motion. Yes. Okay, so please. यही स्लिप रेट है। आई वाज रॉन्ग, इट वाज 10 to 30%। 0% मीन्स कि व्हीकल बिल्कुल फ्रीली लोड कर रहा है, वो जा रहा है, उससे कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक आप ब्रेकिंग नहीं करते। 30% से सॉरी 100% से ऊपर 100% सॉरी फुली लॉक्ड है। रेनी है, रेनी रोड है, चल ड्राई रोड भी है, अक्सर स्किडिंग हो जाती है, हम कहते हैं कि हम ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वो एक्सीडेंट्स काफ़ी हो जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि व्हीकल तो अब जो व्हील है वो तो लॉक है, अब उसके पास कोई व्हील लॉक होने का मकसद ये होता है कि उसकी जो व्हील ट्रैक्शन है वो रोड ट्रैक्शन के साथ मैच नहीं करती। जब वो नहीं करती तो लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं गाड़ी जाके लग जाती है। Yeah, this is also happening while there is a snow. Okay, actually resistance or friction, okay, is not possible. Required friction is not possible. That's why it slip. Even during the rainy days, required friction is not possible. That's why accidents can be happening. So what I explained before right now is this equation. You guys understood it? Yes, sir, you try to explain what are okay, S represent the slip rate and X represent some kind of a distance variable. What the omega and R have shown us. This is the important thing, okay? Okay, so S stands for the slip rate, X is the speed, Yes. and the omega is the rotational rate, and the R is the rolling speed of the wheel. That's it. R is the speed of Rolling speed of the wheel. rolling speed of the wheel, and omega rotational. Yes, rotation rate of the wheel. Okay, remember if the wheel hub, okay, where we usually say the rim of the wheel, okay, if too big then of course angular momentum different. If the small, okay, rotational omega, this is depending upon that, okay, then it will different, okay. So your computing model will calculate each parameter in this regard. Yes. Yes, please. Yes. So that's it. Yes, please. There is a question. Thank you. Okay. Where X और R में क्या डिफरेंस है? स्पीड की वो ये जितना टायर रोटेट करेगा वो उसी के साथ स्पीड है। Okay, आपके पास एक मोमेंटम, एक तो एंगुलर वेलोसिटी होती है और एक दूसरी होती है, इसमें ये डिफरेंस है। आपके पास एक रोटेशनल Actually, if my son is asking a question, I may be wrong. X represents some kind of distance covered in terms of speed. Okay, though it's the speed, but maybe it's kind of okay. If I'm wrong, please. I can be wrong. No. Not sure. Actually, X is representing some kind of a distance covered in terms of speed, and R is the rotation per minute. Okay. Yes. Like thing, please. R is the rolling speed of Yeah, rolling speed. Yes, rotation per minute. I did not study this, but you studied. You are now today. You are a teacher. Okay. And clapping for that. At least. जो मैंने भी एक्सप्लेन किया वो यही है, व्हीकल स्पीड प्लस व्हील स्पीड बाय व्हीकल स्पीड। वो सर व्हीकल स्पीड ही है, नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर द व्हीकल स्पीड। Okay. So let's continue. Okay, ABS components. These are quite important because they make up whole of the ABS, that is operating system. The first one is the accumulator. It is used to store the hydraulic fluid. Note that these all